Hi guys, welcome to class of learning. You're with RAHUL Sharma, your guide for today's lecture. And today we will going to work out the economics. Exactly, the economics, one of the most important topic for economics students is, as you know, supply. Have you heard about supply, man? Supply, exactly, supply, one of the most important topic that do come in mind while talking about economy. Because economy is all about two things, demand and supply. Both are going hand to hand on parallel sides. तो आपने जैसे हम आज की क्लास में क्या डील करेंगे, we're going to work out supply today. Supply को क्लियर करने से पहले उसका हिंदी वर्जन कैन वी नो दैट्स पूर्ति यार है, पूर्ति करनी है आपने. आप किस चीज की पूर्ति कब करते हो? अच्छा, कोई भी आदमी सप्लाई कब करेगा? When a man is going to get supply, supply करने के लिए चाहिए क्या? Basically sir, when I am going to get maximum profit, the maximum profit, definitely I am going to supply more. Simple सा केस है सर, इज नॉट डिमांड कि आपने कहा डिमांड इज अ कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी. नो, इट्स अ विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू सप्लाई, विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस, एक्चुअली प्रोड्यूस द सर्टेन कमोडिटीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. That's the supply. The sum of the quantity being supplied by a guy, ठीक है, is known as supply. अच्छा, आपने से supply समझ आ गया, supply होता क्या, एक आदमी willingly वर्कआउट करता है. तो supply को क्लियर करने के लिए पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? The curve, exactly, the supply curve. So that's really very important. This is the supply curve. Here we have x-axis, O and a y-axis. This is known as to be a supply curve. तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है दैट सर लॉ ऑफ सप्लाई. वी नीड टू क्लियर द लॉ ऑफ सप्लाई. डेफिनेटली द लॉ ऑफ सप्लाई. सर लॉ ऑफ सप्लाई को क्लियर करने की कौन सी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए? दैट हाउ कैन वी रूल आउट द फर्दर फैक्ट्स या द फैक्ट्स दैट मस्ट कम इन माइंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट सप्लाई. तो आपने कहा सर सप्लाई कर्व हैज अ पॉजिटिव रिलेशन, is having a positive relation with price of commodity. When the price rise, the supply rise. When the price falls, the supply falls too. Reason they are having a positive relation. Yeah, when they have a positive relation means अगर कोई चीज 10 से बढ़ के 15 या 20 रुपए होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसके प्राइस कम होते हैं तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी. बॉस डेफिनेटली स्टेट करता है द सप्लाई स्टेट्स अ पॉजिटिव रिलेशन विद इट्स प्राइस. When the other thing remain constant or unchanged, you need to remember that the other things. So clear now, clear. Then the factors affecting supply. You ought to have books यार, हर जगह आपको पढ़ाया जाता है. Factors affecting supply, the cost of inputs, exactly the cost of inputs. Then market scenario, how the things being changed. बड़ी सारी चीजें हमने आज की क्लास में डील क्या करना है, हमने उस इश्यू को डील करना है, उसको हम सप्लाई कहते हैं. सप्लाई है क्या, कैसे डील करती है. अब इस कर्व से हम कुछ चीजें सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सच एज अगर प्राइस बढ़ जाता है, पहले हम क्लियर करते हैं, ये प्राइस है और ये सप्लाई है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ प्राइस वी डू हैव अ दिस मच ऑफ क्वांटिटी सप्लाई. इतनी सप्लाई हमें आ रही. फिर आपने कहा सर व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस, व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस, एक्चुअली वी कैन वर्क आउट द राइज इन प्राइस. सर ऑटोमेटिकली देयर इज अ राइज इन quantity supplied. So this portion is also known as extension or expansion in supply. Expansion in supply. तो आप क्या बोलेंगे सर? with the rise, definitely with the rise in price of commodity, with the rise in rise of commodity, with the rise in the price of commodity, when the other things remain constant or unchanged, the other things remain constant or unchanged, the supply rises is known as to be expansion of supply. क्या कहलाता है? expansion of supply. तो सर सिंपल सा केस था, you get it point that this is not the expansion or you can write down extension of supply. but दूसरे केस में क्या हुआ? when the price falls your quantity, exactly your quantity too falls. And this is known as contraction in supply. क्या कहलाएगा? contraction, संकुचन, पूर्ति में संकुचन. वस्तु की कीमत में आई गिरावट की वजह से वस्तु की गई पूर्ति में गिरावट आने को क्या कहते हैं?
संकुचन। अच्छा, आपने कहा सर दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस व्हेन द अदर रिमेन कांस्टेंट अनचेंज्ड, द फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज नोन एज contraction in supply. So this is known as contraction in supply. Hope you get this. आपको समझ आ चुका होगा, आपको पता है कैसे करना है and how are you going to deal with this. Then jump on the next one. That's something very easy. आपने कहा how will going to tackle with these. कुछ चीजें दिमाग में रखनी है आपको। ये तो गया एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। सर अब एक नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट लीव दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. हाउ वी आर गोइंग टू डील विद राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. दिस इज आल्सो नोन एज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई. आई रिपीट माय वर्ड्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई. एक्सक्यूज मी. Now we're going to deal with the issue of increase and decrease in supply. So we do have least two curves, x-axis O, y-axis, x-axis O and y-axis. This is supply curve. Again, this is a supply curve. Here we can see the price and commodity supplied. The price and commodity supply. Now you can see on my right side that when we do have when we do have a fall or rise, definitely the rise. So we do have a प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ना तो फॉल हुआ ना ही राइज हुआ, जो हमने देखा. Here in both these cases the price remain constant. The price remain constant. Price remain constant and there is a change in quantity supplied. Such as in this case, here we see the price remains same, but the supply falls. The price remains same, but the supply falls. This is known as to be decrease in supply. This is known as to be a decrease in supply. Decrease in supply. And on the other term, definitely when on the other side the price remains same but the supply rises. Look at here, supply rises. This is known as increase in supply. This is known as to be an increase in supply. So this is a short lecture for you to know the contraction and expansion and increase and decrease of supply along with the supply curve. If you like this video, do subscribe and share with the maximum number of students that they too can get the benefit. कुछ चीजें आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में मेरी तरफ से आएंगी जल्दी आगे वाले लेक्चर्स में. The complete book, exactly the complete book of lectures going to serve for each and every topic. And then detailed studies. If you really want to have an idea or like this video, subscribe my channel and share this video with the maximum number of people those have a phobia of economics. It's easy to work out economy in a perfect sense. Those who dreaming the most definitely going